Hello everyone, how are you all? Now this is our final revision. Now we are going to revise our syllabus of class 11th. आज हम class 11th का syllabus bio का syllabus को आज हम quick revise करेंगे. Okay, now let's start. Now, first of all, in this section we discuss about the MCQ, fill-ups and very short question answers. Okay. Now, in the second part, we will discuss about the short questions and long and essay type questions. Okay. Now, let's continue. These are the MCQ questions. Now, first, in classification, classified groups are written in a special way. Is कि classification में जो क्लासिफाइड ग्रुप्स होते हैं आर रिटन इन अ स्पेशल वे में रिटर्न होते हैं. दीज आर स्पेसिफिसिटी, बायनॉमिकल नेम या हायरार्की या टैक्सोनॉमी. तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज हायरार्की. कि अगर हम जो रिटर्न में लिखते हैं तो दिस इज नोन एज द हायरार्की. द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड. स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की स्टडी, this is called naming, classification, biology या taxonomy. So what is the right answer? The right answer is taxonomy. So this is known as the taxonomy. Who become famous because of the binomial naming system? कौन binomial naming system से famous हुए थे? Aristotle, Darwin, Jory या Linnaeus. So what is the right answer? Linnaeus. Okay. Now, Linnaeus was famous through the binomial nomenclature. Now, the next question is, the smallest basic unit of classification is. What is the smallest basic unit of classification is? क्या है classification की basic smallest unit? What is the right answer? The right answer is species. क्या है classification की basic unit? This is the species. Now, the next is Linnaeus classification was. Linnaeus ने जो classification दिया था was कैसा है? This is the artificial classification, natural classification, phylogenetic classification या numerical classification. So this is known as the artificial classification. Okay, so this is known as the artificial classification. Now, the next is classification based on evolutionary relationship among organisms is called. कि जो classification based on evolutionary relationship के बीच में जो classification है among organism is called. कि कहाँ है जो classification based on evolutionary relationship के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है among the organism के बीच में, तो this is called artificial, phylogenetically classification, natural classification या numerical classification. What is the right answer? Right answer is option B. This is known as the phylogenetic classification. Okay. Now phylogenetic it means कि हम क्या study कर रहे हैं? Evolutionary history study कर रहे हैं. Now the next is the type of sexual reproduction in Spirogyra is. कि Spirogyra के अंदर the type of sexual reproduction in Spirogyra किस type का sexual reproduction है? Homozygous, heterozygous, antheridium या budding. So in the Spirogyra, this is the homozygous reproduction. Now, the next is R-phycoerythrin is the main pigment of which division? जो R-phycoerythrin है is the main pigment of which division? किस division का this is the main pigment है? Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae या Cyanobacteria. So what is the right answer? The option C. Rhodophyceae. This is the right answer. कि जो हमारा R-phycoerythrin जो मेन पिगमेंट है वो किसका है? The answer is Rhodophyceae. Animals of which phylum are similar to worms?
कि जो एनिमल्स है विच फाइलम आर सिमिलर टू वर्म्स, किस फाइलम के एनिमल्स सिमिलर टू वर्म्स के जैसे सिमिलर होते हैं, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, हेमिकॉर्डेटा या मोलस्का। तो व्हाट इज द राइट आंसर, हेमिकॉर्डेटा। तो कौन सा होगा राइट आंसर हमारा, हेमिकॉर्डेटा। नाउ द नेक्स्ट इज इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज कैसी होती है, कहां पर होती है, इन द हेड, इन द टेल, इन द चेस्ट, या इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। तो कहां से होती है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग fish electric organs are found, कि in which of the following fish electric organs are found, किसके अंदर fish electric organs present होते हैं, किसके अंदर ऐसी कौन सी फिश है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टॉर्पिडो, स्कॉलिडोन, ट्राइगोन या परसिस्ट। द आंसर इज टॉर्पिडो, पेरिसिस। तो आंसर क्या आएगा आपका, टॉर्पिडो। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एम्फीबिया क्लास एनिमल्स आर, कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है एम्फीबिया के अंदर, जो एम्फीबिया क्लास है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एनिमल्स का, आर, व्हाट इज दिस, रेस्पिरेटरी गिल्स, स्किन, लंग्स या ऑल ऑफ दीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्या है हमारा राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर है, 2, 3, 4, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर, 3। ओके, नाउ इन एनिमल्स ऑफ क्लास एविस देयर इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि इन एनिमल्स ऑफ क्लास एविस, एविस के जो एनिमल्स है देयर इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज स्टमक, क्रॉप, गिजार्ड, बोथ बी एंड सी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, क्रॉप एंड गिजार्ड, दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा क्या होगा, बोथ बी एंड सी, बोथ आर राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीएडल्फस स्टैमिन आर फाउंड इन, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किसमें मिलते हैं, सनफ्लावर, सिट्रस, लेडी फिंगर या ग्राउंडनट। तो किसमें मिलेंगे, ऑप्शन बी, सिट्रस के अंदर मिलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द फ्रूट्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली आर, कि जो फ्रूट्स है सोलेनेसी फैमिली के आर, द फ्रूट्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली आर एस्टिल, बेरियन, कैप्सूल, सेलिक्युआ या पॉड। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर, बेरी एंड कैप्सूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डटूरा इज रिलेटेड बाय, जो डटूरा का जो प्लांट होता है दिस इज रिलेटेड बाय, किससे रिलेटेड होता है, कंपोजिटेसी से, लेबिएसी से, मालवेसी से या सोलेनेसी से। तो किस फैमिली से रिलेटेड होता है, धतूरा जो होता है इट इज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। Now the next question is what type of inflorescence is found in Solanaceae? Solanaceae फैमिली के अंदर किस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है, साइमोस, रैसिमोस, इन्फिनेट या नन ऑफ दीज। तो किस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट है, द इन्फ्लोरोसेंस इज साइमोस। ओके, तो जो सोलरेसी फैमिली है उसके अंदर कौन सा होगा, साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। बॉटनिका नेम आर ग्रेन बाय, कि जो इसका बॉटनिकल नेम है किसका, ग्राम का, ठीक है। द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राम इज, ग्राम का बॉटनिकल नेम क्या है, साइसर एरेटिनम, फैसियोलस वल्गैरिस, लेबलेप परपोरिसिया या डोलिकोस परपोरिसिया। तो व्हाट इज द राइट आंसर,
Caesar aratinum. This is the botanical name of gram. Okay. Now, gave the principle of limiting factor of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस? ब्लैकमैन, हिल, रिवनवैन या कैमन? व्हाट इज द राइट आंसर? ब्लैकमैन, दिस इज द राइट आंसर. तो किसने दिया था? हाँ, ब्लैकमैन ने दिया था. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर. Now, the next question is, who discovered the importance of light and chlorophyll in photosynthesis? हमने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसके अंदर इसमें हमें बताना है who discovered the importance of light and chlorophyll in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ये सब इंपॉर्टेंस के हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे. तो अब हमें इसमें ये बताना है कि लाइट एंड क्लोरोफिल जो इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किसने डिस्कवर किया था? जॉन एसेनस या प्रिस्टले, एंगलमैन या ब्लैकमैन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर. तो किसने किया था? जॉन ने किया था. तो दिस इज द राइट आंसर. व्हेन अ प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय व्हिच साइंटिस्ट? कि व्हेन अ प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज फॉर्म, कि जब प्लांट ग्रो करता है ग्लूकोज फॉर्म होती है. तो व्हेन अ प्लांट ग्रो ग्लूकोज इज फॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय व्हिच साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट ने दिया था? हिल ने, जूलियस वॉन सेकेस ने, जूलियस ने या जूलियस एंगलमैन ने दिया था? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर. Which scientist experiment worked as a milestone is explaining photosynthesis? कि किसने किया था? कि which scientist experiment worked as a milestone is explaining photosynthesis? So what is the right answer? Option C, Cornelis van Zyl. इन्होंने ये आपको दिया था. O2 released by green plants comes from, कि जो O2 रिलीज हो रही है ग्रीन प्लांट्स में, comes from, कहां से आ रही है जो O2 रिलीज हो रही है? तो O2 रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर. कहां से आती है? वाटर से. Which part of ATP synthesis from a transmembrane channel that facilitated the diffusion of protons across the membrane, what is called? कि वो which part of the ATP synthesis from transmembrane channel, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल से which part of ATP synthesis, कौन सा पार्ट ATP synthesis हो रहा है? that facilitate, जो facilitate करता है diffusion of protons across the membrane. membrane के across हो सकते हैं किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोटॉन्स. तो दिस इज व्हाट इज इट इज कॉल्ड, कि वो क्या है? विच पार्ट? तो कौन सा पार्ट एटीपी सिंथेसिस का फॉर्म हो रहा है? और द फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोटॉन्स कौन से होते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? F1, F2, F3 या F0? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर. नाउ, डायमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ, कि जो स्पेशलिटी है डायमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, दिस इज प्रेजेंस इन किसमें होती है? C2 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, CMT प्लांट्स में या ऑल ऑफ दीज? तो दिस इज द C2 प्लांट. C4 प्लांट्स आर कॉल्ड, C4 प्लांट्स किस टाइप के होते हैं? हैज एंड स्लैक टाइप. ओके. Now, the first step in the dark reaction of photosynthesis is, कि जो फर्स्ट स्टेप होता है डार्क रिएक्शन के अंदर ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ CO2 विथ पेंटोज शुगर, या फिर एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल्स इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटो ऑफ लाइट. What is the right answer? Option C, this is the right answer. Okay. Now the next is the unit of photosynthesis is, which is the unit of photosynthesis? क्या unit है?
This is the glycosome, spherosomes, microsomes या quantasome. So what is the right answer? Option D, quantasome. This is the right answer. Now, a proton gradient is created across the thylakoid membrane. जो proton gradient है is created across the thylakoid membrane. So due to the decrease in the number of protons in stroma, due to aggregation of protons in the lumen, due to decrease in pH in the lumen, all of the above. So what is the right answer? Option D, all of the above. This is the right answer. How many ATP molecules are produced from one molecule of glucose in oxygen respiration? कितने होते हैं? 36 ATP. Now, both respiration and photosynthesis required. Respiration और photosynthesis require light, chlorophyll, cytochrome या glucose. कि both respiration and photosynthesis दोनों को किसकी requirement रहती है? This is the cytochrome. Okay. Now, which part of the electron transport system is not? इसमें से which part of the electron transport system is not? नहीं है. Cytochrome, cytochrome oxidase, all of these. So what is the right answer? ubiquinone. The plant hormone first excreted from human urine is auxin, cytokinin, ethylene या gibberellic acid. The plant hormone first extracted from human urine is, this is the auxin. Seeds of plants which are formed in the absence of light, जो seeds which are formed absence of light के अंदर, कौन से ऐसा plant है जिसके seeds formed होते हैं in the absence of light? This is the onion. What is the right answer? Option B, onion. This is the right answer. What type of hormone is ethylene? Which type क्या है ethylene? किस type का hormone है? Solid है, liquid है, gas है या all of these? So this is a gas. कैसा है ये? एक gas है. Growth hormone which helps in ripening of fruit is, कि growth hormone कौन सा है जो help करता है ripening of fruit is, this is the ethylene. कौन सा है? Ethylene. The main protein found in plasma in, जो मेन प्रोटीन है जो प्लाज्मा फाउंड होता है इस कौन सा है? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन या ऑल ऑफ दीज? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज. तो मेन प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मिलता है, दिस इज द ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, सभी हैं ऑल ऑफ दीज. ग्लोब्यूलिन इज यूज्ड फॉर, ग्लोब्यूलिन किसके लिए यूज में आता है? न्यूट्रिशन, इम्यून, ब्लड या नन ऑफ दीज? What is the right answer? Option B, immune system के लिए यूज में आता है. Now the next is basophil secretes. Basophil secrete होती है histamine, serotonin, heparin या all of these? So what is the right answer? All of these. Okay. Now of the following the most toxic is, इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा most toxic है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या ऑल ऑफ दीज? तो क्या है आपका? व्हाट इज द राइट आंसर? अमोनिया. ओके. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स? एक्वेटिक इंसेक्ट्स का क्या नेचर है? अमोनिया एक्सक्रीशन. एक्वेटिक इंसेक्ट्स का क्या नेचर है? द नेचर इज अमोनिया एक्सक्रीशन. नाउ the next is what are emitted in the form of ions by diffusion from the surface of gills of fishes? This is the ammonium ion. So what is the right answer? Option B, ammonium ion. In dicot roots, Casparian strips are found in the cells of resin. कि जो आपके dicot root है उसमें Casparian strips जो found होती है in the cells of resin. So this is the cambium, pericycle, hypodermis या endodermis. So what is the right answer? Option B. Centripetal xylem is characteristics of, this is the root. किसका characteristics है? Root का. Okay. Now the next is
Which of the following is visible in the monocot root? कि monocot में कौन सा visible होता है in the monocot root? Big pith, vascular cambium, endarched xylem या medullary rays? So what is the right answer? Big pith. Okay, this is the right answer. In monocot leaf, chloroplasts are found in. कि जो monocot leaf है उसमें chloroplasts are found in किसमें मिलता है? The answer is medullary ray. Okay, the answer is medullary ray. The method in which the number of chromosomes remain constant from generation to generation. So this is the meiosis. When do chiasmata appear in meiosis? कब बनता है chiasmata meiosis में? कौन से स्टेज में? In डिप्लोटीन. कौन से स्टेज में बनता है? डिप्लोटीन की स्टेज में बनता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लिंदा ब्लैंक्स. ये अभी हमने सारे शॉर्ट एमसीक्यू फिलअप्स एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फिलअप्स. Process of identification, classification and naming of organism, etc. are the basis of, this is the basis of taxonomy. Okay, so this is the fill-up, this is the basis of taxonomy. किसका basis होता है? Taxonomy का. Biological names are usually in language. किस language में लिखे जाते हैं, written होते हैं? This is the Latin language. Now, the next is every organism has a standard name so that it can be identified with the same name all over the world. This process is known as the nomenclature. कि whole और world के अंदर हम एक particular organism को एक particular name से जानते हैं because they have a special name. So this is known as the nomenclature. Fill-in-the blank book contain information about the plants of a region and their habits. So this is the flora. Okay, तो plant से related है, क्या होगा? Flora. Fill-in-the blank are found in the chloroplast of membrane or chlorophyll. क्या present होता है? Pyrenoid. Okay, pyrenoid are found in the chloroplast of membrane members of chlorophyll. तो pyrenoid are present in the chloroplast, जो chloroplast है of membrane और chlorophyll. The color of brown algae depends on amount of, कि जो कलर है brown algae का किस पे डिपेंड करता है? प्यूकोजेंथिन. किस पे डिपेंड करता है? प्यूकोजेंथिन. Now the next is pyriform gametes are found in membrane of, किसमें मिलते हैं? ब्राउन एल्गी. इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी. कि जो पायरिफॉर्म गैमेट्स दे आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ, कौन सी एल्गी के मेंबर्स में मिलते हैं? द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज, प्राइमरी रूट कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. Fill-in the blank are formed in the region of maturation of the root. This is the root hair. तो क्या है? Root hair are formed in the region of maturation of the roots. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as, कि arrangement of flower कहाँ पर हो रहा है? Floral axis पे. तो this is known as the inflorescence. ये अभी हमने आगे एक पढ़ा था इनफ्लोरोसेंस का, साइमोन इनफ्लोरोसेंस का. तो व्हाट इज द इनफ्लोरोसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, दिस इज नोन एज द इनफ्लोरोसेंस. नाउ इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस may become swollen which is called pulvinous. ठीक है. Fill in the blanks require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis. Chemoosmosis. Chemoosmosis require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis.
रिएक्टेज, कौन रिक्वायर करता है? कीमोऑस्मोसिस. यूजिंग द C14 Melvin Calvin studies photosynthesis in algae. ओके, जो मेल्विन कैल्विन थे उन्होंने कौन सा यूज में लिया था? दिस इज द C14. ओके, नाउ the first product formed in the C4 pathway is C4 pathway में जो first product है, this is the oxaloacetic acid. So what is the right answer? क्या है यहाँ पे? fill in the blank. Oxaloacetic acid. Now the next is when carbohydrates are used as a respiratory base in respiration, it is called floating respiration. Glycolysis pathway is also called EMP pathway. Glycolysis को हम और कौन सा pathway कहते हैं? EMP pathway. Pyruvic acid in the presence of oxygen reaches mitochondria and forms acetyl coenzyme A. क्या form करती है? Acetyl coenzyme A. In the absence of oxygen, pyruvic acid produces CO2 and alcohol inside cytoplasm. कहाँ पर होती है? Cytoplasm में. Okay. Now the next is development is the combination of two processes, growth and differentiation. Development क्या है? Two processes में involved है. The first is growth and the second is differentiation. Permanent and irreversible changes in the size and volume of living organism is called growth. Now, fill in the blank. Cambium and cork are example of meristem. किस तरह के meristem है? Lateral meristem. The cambium and cork are the example of lateral meristem. The increase in growth per unit of time is called growth rate. This is known as the growth rate. 4 times exponential growth can be divided by W1 equals to W0 ERT. This is the formula. Just exponential growth का है. Cells use oxygen for metabolic activities. Oxygen is transported mainly in the form of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. In aquatic arthropods, respiration occurs through a special vascular structure. This is called gills. Okay, तो कौन सा vascular structure है? This is gills. The pharynx is a common passage for both food and air. Pharynx क्या है? Common passage है, ठीक है, food और air के लिए. Now, the participation of a particular gas in the pressure in a mixture of gas is called partial pressure. This is known as the partial pressure. Diffusion membrane mainly consists of 3 layers. किसकी मिलकर बनी है? Diffusion membrane 3 layers. In plasma, 90 to 92% consists of water and 6 to 8% consists of protein substance. अगर प्लाज्मा में हम देखें तो 90 to 92% क्या है? वाटर है और 6 to 8% क्या है? प्रोटीन. Okay. Now, in adults, red blood cells are produced in the red bone marrow. कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? red bone marrow में. The highest number of leukocyte is found in the, कहाँ पे मिलता है? neutrophils में. ठीक है, highest number of leukocyte found in the neutrophils. Eosinophils provide defense against infection. Eosinophils किसके against हमें provide कराते हैं? Defense against infection. Epidermal diffusion system is the outermost covering of the plant. कि जो diffusion system है, this is the outermost covering of the plant. The outside of epidermis is often covered with a waxy thick layer. This is called cuticle. It takes about 90 minutes for the yeast cell cycle to complete. कितना लेता है? 90 minutes. ठीक है, कंप्लीट होने में एक सेल साइकिल को यीस्ट के अंदर. The egg-shaped structure at the exchange point is called chiasmata.
कि जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कहां पर, एट द एक्सचेंज पॉइंट पे, जहां पर क्रोमोसोम एक्सचेंज हो रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द chiasmata. उसे हम क्या कहेंगे, chiasmata. In stem, protoxylem is in the center and metaxylem is outside. प्रोटोजाइलम कहां पर होता है, सेंटर में, और मेटाजाइलम कहां होता है, आउटसाइड. In root, radial vascular bundles are found. रूट में कैसे होते हैं, radial vascular bundles. The diameter of human red blood cell is approximately कितना होता है, 7.0 micrometer. Beside flagella, villi and fibrin are also surface structure of the bacteria but do not play a role in mortality. Cell membrane is mainly made up of lipids and proteins. किसकी मिलके बनी होती है, lipids and proteins. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. The inner space surrounded by the inner membrane of the chlorophyll is called stroma. Georg Palade first observed the dense granular structure ribosomes through electron microscope. It takes about 90 minutes to use cell cycle. Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division like heart cells. During the Z1 phase, proteins are synthesized in prepared mitosis while cell growth continues. यहां पर आएगा आपका प्रोटीन. Mitosis has been divided into 4 stages. Now these are the very short question answers. Now we have complete our fill-ups and MCQ. Now let us move on towards the very short question answer. अब हम move करते हैं very short question answer की. The first is name 2 external factors which affect the process of photosynthesis. कि 2 मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को. The first is sunlight and the second is concentration of CO2. Sunlight and CO2. The next is which scientist discovered oxygen in 1774? The Priestley discovered oxygen in 1774. किसने डिस्कवर करी थी, Priestley. According to Julius von Sachs, what is formed when a plant grows? तो क्या होगा कि जब प्लांट ग्रो करेंगे, ग्लूकोज इज फॉर्म. विच इज फॉर्म, ग्लूकोज इज फॉर्म. तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. इन विच सेल ऑफ लीव्स इज क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी? तो कहां पर, इन विच सेल ऑफ द लीव्स, जहां पर क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है. तो इन विच सेल, दिस इज द मेसोफिल सेल्स. कहां पे मिलेगा, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. नाउ which cytochrome does not contain Fe particles? This is the cytochrome A3. Okay, cytochrome A3 does not contain Fe particles. Now the next is fatigue is fact due to the accumulation of what in the muscles. हम कहते हैं कि मसल्स फटीग हो जाती है कि when we do more exercise, so now we get tired, our muscles get tired. What is the reason why muscles get tired, why muscles are fatigued? The reason is accumulation of lactic acid. Okay, what is the reason? Reason of accumulation of lactic acid. Name of the chemical that increase respiratory climatic. So what is the कौन सा है केमिकल? दिस इज द इथाइलिन. व्हाट इज पॉस्चर इफेक्ट? क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 चेंज इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड पॉस्चर इफेक्ट. क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 change into the aerobic respiration, it is called posture effect.
What is the name of connector molecule between glycolysis and Krebs cycle? So this is the acetyl coenzyme A. कौन सा है connector molecule? This connector molecule is acetyl coenzyme A. ठीक है? So this is known as the acetyl coenzyme A. Write the name of scientist who discovered glycolysis. किसने glycolysis discovered किया था? So it is discovered by Ambedin, Meyerhoff and Parnas. ठीक है? That's why it is known as the EMP pathway. EMP, Ambedin, Meyerhoff and the third is Parnas. ठीक है? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? EMP pathway. Now, the next is what causes primary growth in plant? क्या करता है primary growth in plant? So meristem located at the apex of the root and stem. कहाँ पर होता है? Meristem located at the apex of the root and stem. Tell some parameter of growth. Growth के क्या क्या पैरामीटर हैं? कौन कौन से पैरामीटर है? Increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and number of cells. So this is the parameter of growth. ये क्या हमारे growth के पैरामीटर है. Explain the stages of growth. Growth की कौन कौन से stages है? There are 3 stages: meristem, elongation and maturity. These are the 3 stages. ये 3 main stages है growth की. Okay. Now the next is what is growth rate? क्या है growth rate? Growth is the increase in growth rate per unit time. Growth क्या होती है? Increase होती है. तो जो growth rate है, increase हो रही है growth per unit time. This is known as the growth rate. Okay. How is exponential growth expressed? This is the formula. ये हमने अभी फिलअप्स में भी देखा था. यहाँ पर ये रहा, हमने अभी फिलअप्स में भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये रहा. ठीक है? तो दिस इज द सेम क्वेश्चन कि जो अभी हमने फिलअप्स में भी सॉल्व किया था. Now this is the exponential growth. Who discovered the oxygen and from whom? कि who discovered oxygen? किसने discovered किया था? And from whom? किसके through? तो oxygen was isolated by F.W. band from tip of coleoptile of oat seedling. ओट के जो सीडलिंग थे, ओट के जो सीड्स थे, उनके थ्रू किसने डिस्कवर किया था? F.W. वेंट ने डिस्कवर किया था. ठीक है? Now the next is write the names of those 2 gases which are flux-changed during respiration. These are the 2 gases, oxygen and carbon dioxide. Write the function of epiglottis. Epiglottis क्या करता है? It works to close the glottis while swelling food. जब हम food swell कर रहे हैं, food को gain कर रहे हैं, तो epiglottis क्या करता है? Cover up करता है glottis के mouth को cover up करता है. एनगल्फ कर रहे हैं फूड को. तब राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग. तो द इंस्ट्रूमेंट इज स्पायरोमीटर. क्या इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्पायरोमीटर, जिसके थ्रू हम क्या मेजर कर रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग. What type of muscles in the human heart? The human heart is the straight or cardiac muscle. किस टाइप की मसल्स है? स्ट्रेटेड एंड कार्डियक muscle. Which important organs are affected by high blood pressure? Name any 2. कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? ब्रेन एंड
kidney. What other name is the human circulatory system knows? कि human circulatory system का other name क्या है? Known as the vascular system. Human circulatory system is also known as the vascular system. From which level does the heart originated? From which level does the heart originated? So this heart originated from the mesodermal level. Ectoderm, mesoderm, endoderm है, तो heart कहाँ से होता है? Mesodermal level. Now the next is what shape is the heart? कैसा होता है? A fist, like a fist. Fist के जैसा ही इसका shape होता है. Write the name of any two nitrogenous waste emitted by animals. This is the ammonia and urea. Okay, तो two waste कौन कौन से हैं? Ammonia and urea. What type of animals are terrestrial snail on the basis of excretion? तो terrestrial snail are uricotelic animal. ठीक है, कि जो ये हमारे terrestrial snail है किस टाइप का है? Uricotelic animal. ठीक है. Now the shape of human kidney is similar to whose seeds? The shape of human kidney किसके seeds के equal होती है? Bean, like a bean seed. Bean seeds के equal होती है जो shape होता है. Into which part is the sporophyte differentiate? Write the name. तो sporophyte differentiate किसमें होते हैं? Food, seta and capsule. Food, seta and capsule में हम sporophytes को divide करते हैं. From the point of view of evolution, which are the first plants to grow on land in which vascular tissue, xylem and phloem are found? कि from the point of view of evolution, the first plant to grow on land are ferns. First plant कौन सा है? जो land पे grow किया था, land in which vascular tissue, xylem and phloem दोनों जिसमें present थे. तो दिस इज द फर्न जहां पर आपके वैस्कुलर टिश्यू जाइलम भी प्रेजेंट थे एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट थे. ठीक है, किसके थ्रू? व्यू ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सेल्वेनिया? राइट नेम. तो कोई भी आपको इसमें मैक्रो यानी लार्ज स्पोर्स एंड माइक्रो यानी स्मॉल स्पोर्स. राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स कमिंग अंडर जिम्नोस्पर्म, साइकस एंड पाइनस. ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, साइकस एंड पाइनस. राइट द फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट. तो नीडोब्लास्ट का आपका है एंड डिफेंस का है, कैप्चर ऑफ प्रे है. ठीक है, एनकरेज है. बायोल्यूमिनेसेंस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एनिमल इन विच फाइलम. किसके अंदर होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट is well marked in electropores. ठीक है, किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रोपोर्स के अंदर. On which surface is the body animals of phylum Platyhelminthes flattened? The body of animals of phylum Platyhelminthes is flattened from the dorsal surface. कहाँ से होती है? Dorsal surface से. Now the next is the animal of Platyhelminthes are circular in cross section. Hence, what are they called? So they are known as the roundworms. ठीक है, so they are known as the roundworms. Write the name of any one tissue system. This is the ground tissue system या fundamental tissue system. Write the name of structure that comes under the epidermal tissue system. तो यहाँ पर आपके appendage, trichomes and hair कुछ भी आप लिख सकते हैं. The epidermal tissue system comparison epidermal cells, stomata and the epidermal appendages. ठीक है, trichomes. What type of outer cell is the guard cell? तो guard cell कैसी होती है? Is thin. The outer wall of the guard cell is thin. कैसी होती है? Thin. What do stomata, aperture guard cells and the surrounding subsidiary cells together form? So the stomatal aperture guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. Okay. Now the next is write one difference between prokaryotic and eukaryotic cells.
तो यहाँ पर आपके वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स. Which scientist propound the fluid mosaic model? किसने किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने. Give any two example of passive transport, diffusion and osmosis. The concentration of whose ion is responsible for the assembly and disassembly of ribosome unit. तो यहाँ पर आ जाएगा magnesium is responsible. Okay. Which cell organ is called protein factory of cell engine? Ribosomes. Write the name of the smallest cell organelle. This is the ribosome. Which classes of animals have symptoms to external ears and hair on the body? तो यहाँ पर आपके मैमेलिया क्लासेस कौन सी होगी? मैमेलिया क्लास. राइट द फुल नेम ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. What are the two components of each name? Generic or specific? Now, which phase is the best for studying chromosome? Metaphase. How much time does it take for the cell cycle to complete in onion? This is the 20 hours. Which are the two basic phases of the cell cycle? Interphase and M-phase. Okay, so these are the questions. ये सारे questions थे जो हमने MCQ, fill-ups and very short question answers क्लास 11 के बायो के हमने सॉल्व किए हैं सभी चैप्टर्स के. ओके, तो नाउ आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे, आप इनको रिवाइज करेंगे. ओके, फॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.